With just hours left before decision day, a poaching charge has erupted in Delhi, coinciding with exit polls predicting a BJP victory. The Aam Aadmi Party alleges Operation Kamal by the BJP, leading to high drama at Arvind Kejriwal's residence, where the Anti-Corruption Bureau arrived following orders from the Lieutenant Governor to conduct an investigation. All of this has been rejected by the Aam Aadmi Party, who say that this is being deliberately timed and that the ACB arrived even before they formalized their complaints. All of this comes just ahead of the Delhi elections, which come out tomorrow. The latest in this case is that the investigators of the ACB have sought details from Arvind Kejriwal, including phone numbers, details of MLAs who the Aam Aadmi Party allegedly says have allegedly been poached. ये शिकायती पत्र मैंने स्वयं से एसीबी में दिया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है और वो इसकी जांच करेंगे। सर, देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उनके कुछ जो एमएलएज हैं उनको पोच करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? आप इसे सीरियस एलिगेशन समझते हैं? ये बेहूदगी है आम आदमी पार्टी की, जो हर बार करते हैं, और इस तरह के फॉल्स एलिगेशन लगाने इनके चरित्र में है। अरविंद केजरीवाल खुद 3-3, 4-4 बार हमारे नेताओं से माफ़ी मांग चुके हैं कोर्ट में। आतिशी मार्लेना इसी मामले में जमानत पर है। अब संजय सिंह की बारी है। ये इनके बाकी नेता जो आरोप लगा रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर भाग जाते हैं, लेकिन इस बार इनको भागने नहीं देंगे। इनको बताना पड़ेगा कानून को कि कौन लोग हैं, 7 हैं या 16 हैं, आपस में तय करें, क्योंकि दोनों की स्क्रिप्ट अलग है, अरविंद केजरीवाल की, संजय सिंह की। किसने फ़ोन किया, कितने पैसे, किसको फ़ोन आया, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। हम इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में जा रहे हैं, जांच की मांग करें और इनको कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए मजबूर करेंगे। जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है और जैसा हमारा भी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब इन लोगों ने जिस प्रकार से पहले भी सनसनी फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमने तो इसका कंप्लेन भी कर दिया। पार्टी ने कंप्लेन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टाचार है, शुचिता है, और अगर कोई गलत बात करेगा तो हम उसकी जांच करने के लिए जरूर कहेंगे। एसीबी को हमने कंप्लेन किया है। The BJP raised a complaint about these allegations with the Lieutenant Governor, and promptly acting upon this, the Lieutenant Governor ordered a probe by the Anti-Corruption Bureau and ordered them to launch an investigation into these allegations so as to see, the truth behind these allegations of this poaching charges. After that, an Anti-Corruption Bureau team lands up at Arvind Kejriwal's residence, and they're here stationed for around 2 hours. Arvind Kejriwal's and Aam Aadmi Party's legal team also lands up here. I spoke to the legal team head, Mr. Sanjeev Nasiar, and he told me that ACB team is not being allowed to go inside the residence to investigate or to collect any sort of evidences. Why? Because they do not have any legal document, any legal notice that they brought with themselves, which says that they can carry out this investigation. Mr. Nasiar also mentioned that these are legal proceedings that need to be followed, which was not duly done by the ACB. So how can they land up just like this and want to investigate a former chief minister's residence? Now,
Sanjay Singh also spoke to me, even Mr. Nasyar, the advocate, both of them indicated that it is this agency that is now acting upon the BJP's commands, because how is it so that within a few hours the BJP asks for a complaint and asks for a probe, and the LG also gives the order within, very prompt order to launch an investigation, and within a few hours the ACB lands up at the former Chief Minister's residence. How is it that this is happening with such, smoothness, whereas when the Aam Aadmi Party had been asking for an investigation into the matter, no one was paying heed? These are questions that Sanjay Singh has raised into the matter as well. And following that, when the ACB team left Arvind Kejriwal's residence, what we know is that the ACB team served a notice to the Arvind Kejriwal, in which there are main 4 to 5 points which state that Arvind Kejriwal should appear before the ACB office today, before any time that is convenient for him, but today, and provide answers to questions such as to, whether or not the Twitter post, the formerly known as Twitter post, was made by him genuinely or not, and the details of these 16 candidates, from whom have they received the calls, the call numbers, the call recordings, the call logs, every single detail and factual evidence to be provided on the record so as to substantiate their argument of their allegations. And the ACB notice also mentions that why should the ACB not level any sort of legal action against any such person who has made such allegations and spread such information on social media platforms, because this has amounted to a tantamount panic creation sort of a scenario, not just between the candidates but also between the voters. So really a very intense day between the BJP and the Aam Aadmi Party, right down to the last moment before the Delhi Assembly election results come out. With camera person Arun Negi, this is Tanushka Datta for NDTV.